Hi, good evening, everyone. Welcome back to SuperFix Sports. My name is Zahib Nabil, and I am with today with the heaviest panel ever we had. We have people from India, we have people from Afghanistan, we have people from Pakistan, we have people from Sri Lanka, we have people from Bangladesh, and it's the heaviest panel you can imagine, truly made for the World Cup. We'll talk about the World Cup. Without wasting any time, let me introduce you to our panelists. Today we have Mr. Nayyar, one of the most famous sports journalists in UAE. He's also a blogger. He covered more than I think 7 World Cups, around 4 2022 World Cups, 5 Champions trophies, and over 21 day international. We have with us uh, Mr. Presley, who is the founder and CEO of Desert Clubs Cricket Academy, and he's a former first-class player also from Sri Lanka. We have Mr. Mohammad Naeem, operations manager, Bangla Tigers. He's from Bangladesh, and he's also a former first-class cricketer. And we have Mr. Nadeem Fazal, operations director at SuperFix. He's from Pakistan and former first-class cricketer from Pakistan. Welcome on board, everyone. I want to thank you all for joining this session with us. It's really an honor to have you all on SuperFix Sports. Just now, we have been joined by Mr. Abdul Latif Ayubi as well. Mr. Abdul Latif Ayubi is from Afghanistan, and he is also a member of Afghanistan Cricket Board. And he is also a captain of, I think, Kabul as Zulmi. well. Kabul's Zulmi as well. Welcome on board, everyone. Thanks a lot for joining once again. Starting with Mr. K.R. Nayyar, the one of the most experienced gentlemen among us. Mr. Nayyar, it's really honor for us to have you here. We have read about you. You have been associated with Gulf News, the biggest English language newspaper here. Talking about World Cup, because this show is all about World Cup, and we are from representing 5 different nations in the World Cup. 5 nations are still not there, but we know that we are the major playing nations of this World Cup and major stakeholders. Mr. Nayyar, how you see the selection of the Indian cricket team? First of all, I'm really honored to be in this elite group which knows about cricket. So I have to speak excellent cricket here. And so what I did was I decided to dress myself in my 2019 ICC. I think you can see me 2019 ICC World Cup T-shirt because that was the last I reported in England, and this will be my 14th World Cup. So Wow. I have made a good study of almost all the teams, and for me, when you're answering to your question about how the Indian team is, the Indian team is a team that has been selected based on performance. But what matters is how they perform in front of their home ground. As you know, the pressure of performing in front of a home crowd is tremendous. And that is what will be a very, very important criteria. The expectation of the people, the expectation of each and everyone who is going to be in the ground. So that is going to be of paramount importance. And looking at the team, let us start with Rohit Sharma itself. Rohit, as it says, Rohit will have to hit. And if he hits, you know what happens. And the batting is followed by that new and young, energetic guy called Shubman Gill. He's fantastic, and he has been consistent. And these two, if they give a good start, it will play a very big role. And why I am saying that, because you look at the history of World Cup, you will find that team which had the best openers have always gone on to win the World Cup. So it depends on a lot on these two people, followed by the man whom you all expect, Virat Kohli. That's great, Mr. Nayyar. Really nice to hear you. We'll come back to you. Yeah. Immediately moving to Mr. Persley from Sri Lanka after the defeat in Asian Cup, 50 runs all team out.
Do you think Sri Lanka has a chance in the World Cup? You are going to make semis or make finals. How you look at your team selection and how you think your team will come back from this trauma which they had? Yeah, it was. First of all, thank you very much for inviting me here. It's a really honor to be here and sharing my knowledge with the cricket experts. Uh, coming back to the questions about Sri Lanka cricket at the moment, yes, we were very lucky to reach the finals because Sri Lanka, we have a lot of top quality players, but our consistency has been a problem right throughout. If you see, after the retirement of the greats like Sangakkara, Mahela, Dilshan, Sanat, and all this great crowd, we we got players to play for Sri Lanka, but their consistency has been a question. They will become champions one day. The next day they will be the least performed team. So that's what happened in many matches. If you take for the last 3 to 4 years, their consistency has been a problem, not the talent. So getting out for 50 runs, and you can say one of these days we have seen it has happened to many teams in the past as well, great teams, not only Sri Lanka teams, but I don't think that has become a drawback to the preparation camp of Sri Lanka. And playing in India, it's like almost playing in Sri Lanka. So I don't see much of a difference when it comes to weather conditions, preparation of wicket. Even Indian wickets are much more batting friendly wickets than Sri Lankan wickets. So keeping that in mind, so the team is formed well, but unfortunately I got to know Wanindu is not available due to an injury. So that has Yeah. become a major drawback to the team's balance as well, because he has been performing really well during the last you can say couple of years time. He was our number one all rounder, and he has contributed immensely for the success of the team. But I'm happy to see Charmika Karunaratne has brought back to the squad, and I'm sure that he can add lot of value when it comes to the fast bowling department. And looking forward for these guys to believing themselves and start play their brand of cricket rather than worrying about the opposition strength and weakness. That's what you need to do. Anyway, we are going to the tournament as underdogs probably, because we Okay. have we are playing against heavy giants like India, England, Australia, and New Zealand. So when it comes to big battles, sometimes that underdog tag is also playing a major role. Your confidence level. There's nothing to lose. So go out True, and sir. play good cricket. That's what you Thank you. can do. Right. True, Mr. Presley. We'll come back to you with more details. Mr. Naeem, how are you, sir? Yeah, Well, thank you, Zubai, uh, and thank you, SuperFix, for inviting me. शुक्रिया आप that's सबको. great. अस्सलाम वालेकुम. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप आए. अस्सलाम वालेकुम. तो नईम भाई, क्या लगता है what Sri Lanka did in Asia Cup? You were a good side, but unfortunately didn't make it to semis. World Cup में आपको क्या लगता है? You think the new team, the new strategy, you have a chance or no? And how you think the team selection, is it the best combination they can make or not? Yes, actually, आपको पता है एशिया कप बांग्लादेश के लिए एक न्यू जनरेशन कुछ यंग टैलेंट्स था, जिसमें से कुछ मिसिंग थे हमारे सीनियर प्लेयर. सबको पता होगा तम इकबाल, महमूद अल रियाद एंड शांतो इंजर्ड था, तो उसकी वजह से एशिया कप में काफ़ी चैलेंजिंग रहा बांग्लादेश के लिए. आपको लेकिन पता है. बांग्लादेश ने इंडिया को हराया जो एशिया कप की विनर और बड़े हाँ, अच्छे तरीके से हराया. सो एक एक्चुअली जहाँ पे बहुत ये ज़्यादा डिमोरलाइजेशन है, वहाँ पे एक बहुत बड़ी मोरल आप लोगों यस के लिए अपलिफ्ट भी है. आफ्टर ऑल जो इंडिया के साथ जो मैच हुआ, ओवरऑल देखा जाए तो ये जूनियर जिस तरह से कमबैक किया, एक टीम को विन किया, जेल हो गए. सो ये गुड साइन है बांग्लादेश के लिए, कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप करते हैं आगे वर्ल्ड कप के लिए. और आफ्टर ऑल अगर आप देखा जाए तो अभी न्यूजीलैंड के सीरीज पे हमने देखा
जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बांग्लादेशी फैंस एंड बांग्लादेश एज ए बीइंग ऑफ क्रिकेटर, सीनियर प्लेयर तमीम इकबाल वो जो है इंजरी से बैक किए और आते ही इन्होंने बहुत अच्छी शानदार परफॉर्म किया। अगर लॉस एक मैच हाथ से निकल गया, देखा मैच विन नहीं था, बट आफ्टर ऑल मोहम्मद रियाद और जो हमारी फोकस था पूरी बांग्लादेश जो है फैंस का, जो मोहम्मद रियाद और तमीम इकबाल किस तरह से कमबैक करते हैं, राइट। सो इस मैच पे काफी कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, जो हमारी दो सीनियर बैट्समैन वर्ल्ड कप में शामिल होंगे। और शांतो जो इंजर्ड था, नजमुल शांतो इज वेरी गुड फॉर्म, आप सबको पता होगा, बहुत ही जबरदस्त शानदार बैटिंग कर रहा है। और वो भी वर्ल्ड कप में इंशाल्लाह होपली उनकी इंजरी मेरे ख्याल में मिल चुके, रिकवर कर चुके। तो ओबियसली हमारा जो अभी न्यू यंग जनरेशन को चाहिए लड़का तौहीद लीडर, आप देखें तो बहुत अच्छे शानदार परफॉर्म कर रहे हैं। श्रीलंकन लीग में भी काफी अच्छे परफॉर्म किया, एशिया कप में भी एक मैच में अच्छे परफॉर्म दिखाया उन्होंने। सो इंडिया के जो पिच है वर्ल्ड कप के जिस तरह से सिमिलर है, बांग्लादेश और इंडियन पिच मोर देन सिमिलर है। बांग्लादेश में थोड़ा स्पिन ज्यादा है, स्पिन विकेट मीरपुर में ज्यादातर बहुत ज्यादा स्पिन होता है, बट इंडिया जो है बैटिंग विकेट है और इसमें स्पिन सेमी दोनों ही सिमिलर चलता तो है। बैटिंग आपको विकेट लगता है ये स्पिनर्स का वर्ल्ड कप होगा? नहीं, इसमें इतना खास स्पिनर के भी नहीं होगा, क्योंकि डिपेंड करता है ग्राउंड के ऊपर, कौन सी ग्राउंड पे मैचेस हो रहे हैं। और फर्स्ट मैच जैसे बांग्लादेश का अफगानिस्तान के साथ मैच है, सो इस पे स्पिन का कॉम्बिनेशन हो सकता है, क्योंकि वो पिच ग्रेट, पे। आपने अफगानिस्तान का नाम लिया तो हम अब्दुल लतीफ अयूबी भाई के पास चलते हैं और अफगानिस्तान के बारे में पूछते हैं, फिर आगे चलते हैं। जी दोबारा जी, आपके साथ हैं। ऑब्वियसली थैंक यू। थैंक यू मच नईम भाई। अस्सलाम वालेकुम अयूबी भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? कैसी तबीयत है? वालेकुम सलाम नदीम भाई, कैसे? ठीक ठाक, अच्छे। बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का फजल। तो अब्दुल लतीफ साहब, आप अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को किधर देखते हैं? आपको लगता है कि इस वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान की टीम कोई अपसेट कर सकेगी, कुछ चेंजेस आएंगी? अभी तक अब अफगानिस्तान की टीम किसी मेजर टूर्नामेंट में कोई बड़ा बर्तरी नहीं हासिल कर सकी, आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो सारे मेंबर्स को खुशामदीद कहते हो। अफगानिस्तान टीम अल्हम्दुलिल्लाह अभी बहुत अच्छा पोजीशन में है, अच्छा है। इसलिए अगर देखेगा हमारा टीम, अल्हम्दुलिल्लाह अफगानिस्तान का टीम स्पिनर्स बहुत अच्छा है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर टॉप 10 में तकरीबन 2-3 बॉलर्स है अफगानिस्तान का, और ऑलराउंडर्स इस तरह है। नबी अच्छा फॉर्म में है। ये अफगानिस्तान टीम इसी टाइम पे वर्ल्ड कप के लिए तैयारी भी अच्छे है। और अफगानिस्तान टीम इस दफा जो वर्ल्ड कप इंडिया में होगा, एशिया कंडीशन में होगा, अफगानिस्तान टफ होगा इंशाल्लाह, और अच्छा मैच हो जाएगा। अफगानिस्तान का जो एक दो तीन महीना पहले थोड़ा इंजर्स थे प्लेयर, अजमत नहीं था एशिया कप में, और नजीब अच्छा नहीं था। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सारा प्लेयर जो है नवीन नहीं था। अफगानिस्तान का जो अभी वर्ल्ड कप के लिए जो स्क्वाड बनाया है बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन के साथ है। स्पिन बॉल, ऑलराउंडर्स और फर्स्ट बॉलिंग सारा अच्छा है। नवीन आने की वजह से और अजमतुल्लाह मरज़ई आने की वजह से अफगानिस्तान टीम बहुत अच्छा हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह नबी फार्म में नहीं था, नबी फार्म में आया है। इस तरह हमारा ओपनर जो है, अगर आप पाकिस्तान सीरीज के सेकंड ओडीआई मैच देखा होगा, और उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म ओपनर्स किया। फिर लास्ट मैच में श्रीलंका के साथ मिडल में बहुत अच्छा परफॉर्म हो गया। अभी तो हमारा टीम का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, सारी प्लेयर्स अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे है। इंशाल्लाह कोई टीम होगा, टफ मैच होगा, बड़ा टीम के साथ सारा टीमों के साथ टफ मैच करता है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर, बेस्ट ऑफ लक सर। तो अभी मैं जाता हूँ नदीम भाई की तरफ, थोड़ी उनसे भी बातचीत हो जाए, वो भी यहाँ पे बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? Walaikum salam, Zaid. Thank you very much to you and to SuperFix Sports and all these lovely panelists. Thank you very much for taking me on air. दैट्स ग्रेट। नदीम भाई, आपसे एक क्विक क्वेश्चन है कि जो सबसे अभी पूछ रहे हैं, आपको पता है पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन के बारे में आप क्या कहते हैं? और इंडिया से इबरतनाक शिकस्त के बाद आपके ख्याल से टीम का मोरल कैसे होगा? और इतनी इंजर्ड टीम क्या वर्ल्ड कप में कुछ कर सकेगी, या बस हम सेमीफाइनल से पहले टिकट वापस देखें? Well, see, Pakistan has a history of surprising the world, and it's not new. So, sometimes what happens that
Pakistan has a knack of getting overconfident at a time. They were like rated as number one ODI team, and they have beaten some of the teams like Afghanistan and Zimbabwe and Sri Lanka in recent past. So क्या हो गया कि कहीं ना कहीं उनको अपने एवरेज से मतलब थोड़ा लो स्टैंडर्ड पे जाके वो खेले, जिसकी वजह से they were not up to the task against when they played against the beautiful side of India. But I think Asia Cup will be playing like a blessing disguise for them, and they need such one defeat to get back their confidence, to be on their top game. And I don't think that the defeat against India is going to make a major difference. But yes, there are a lot of learning for them, and I think they have picked a good team. I can see that they have picked the team who has got experience, and they have been playing together over the years, and they have got good spinners like Osama Mir. Nawaz can surprise, and I hope that Shadab will stop bowling the full tosses. And much depends upon the match winners. So there are 2 to 3 match winners in this team, the likes of Shahin Shah Afridi, Haris Rauf, and Babar Azam on top. And they have got good contributors as well in the team. So I'm very much optimistic. I think Pakistan will So, do well considering the Asian conditions. okay. What about Hassan Ali's entry into the team? How you say take it? See, I mean, the exit of Naseem Shah was surprising and it was a disaster, but they had to pick somebody. So people were talking about Zaman Khan, people were talking about Arshad Iqbal, and people were talking about Hassan Ali. Now, Hassan Ali, why he has been preferred? Because of the experience. And we all know that he is a quality bowler. He has not been focusing on his cricket, but the recent performance that he has given in, I think, Bangladesh Premier League and recent franchise cricket, that really was a turning point, and that caught the eye of the selector. So I think he will do well. Again, considering the conditions of the India and the wickets, the way they behave, medium paces with the little swing can make a big difference. So that's the reason I think they have preferred Hassan. That's great. Thank you very much, Mr. Nadeem. So, going to the next round of the program, Mr. K.R. Nayyar, what you think will be the underdog in Indian team this time, or you can see a player who will make a difference and take India towards the victory? Yeah, the point here will be that never be worried about the recent performance. See, remember, Sri Lanka were all out for 50. True. But the point is that do not expect them to be getting all out all the time by 50, because they will come back stronger as a better team, removing all the defects they have. Same is going to happen with Pakistan. So, what India will have to do is, yes, Asia Cup victory is history. Now, we Indians will have to perform at their best, and that is a combination that is needed. A combination of good batting, good bowling. The battery, they have proved, everybody that talked about Pakistan pace attack to be the best. But in Asia Cup, Indian pace proved that they can also destroy batting lineups. The spin, Yadav, Aksar Patel, and I feel if Ashwin also can be taken in some way, that will make a huge difference, because the wickets might help spin. But it doesn't mean that all the other teams do not know to play spin. They are good players of spin, but home wicket plays a big role. So these That's are right. aspects which we will have to look into. Mr. Nair, there is a question from Mr. Abrar Wali asking you that who can be the weakest link in an Indian team? What you think? It's a very unique question. I might not have asked you, but being coming from the audience in the comments, so that's the question. Oh, the weakest link. Oh, that's a very very yeah. The weak link of the Indian team will be the pressure. Not any individual player. The weak link will be the pressure to handle the if a defeat happens in any of the match, how they will rebound. Because a home team defeated, a favorite defeated,
is a big blow, and that too in front of the home crowd. So that Got your is the point. weakest link with Got which your they point. have to surmount. And for That's great, that, Mister. a strong captain, a captaincy of Rohit Sharma will play a very, very big role. Does does he have the fighting spirit of Virat Kohli? Does he have the fighting spirit that Dhoni exhibited? Does he have the winning magic of Kapil Dev? They all won the World Cup. Like Kapil Dev won the World Cup because of that. Dhoni won the World Cup because of that. Virat Kohli led team to many victories because of True. his dashing spirit. The same thing Rohit Sharma will have to show. True, sir. Mr. Naeem, same question goes to you. What you think? Who will be the player who can take Bangladesh towards victory? Who will be that underdog? Who will be that player who will come from nowhere and make a difference? Yeah, actually, we hopeful, Shakib Al Hassan, everybody knows that he's the number one all-rounder. So being of captain, so उम्मीद है इस बार वर्ल्ड कप के कुछ एक एक्सीलेंट परफॉर्मेंस पे लेके जाएंगे बिकॉज उनकी कैप्टनसी उन्होंने दुनिया की हर लीग खेले हुए और हर प्लेयर से उनकी वीकनेस उनको पता है और बहुत ही ट्रेमेंडस लेफ्ट आर्म स्पिनर सो उनके साइड पे जो इस टाइम जो टीम कॉम्बिनेशन मैं इस टाइम देख रहा था बांग्लादेश की इस सीरीज के बाद न्यूजीलैंड सीरीज के बाद इसमें नासुम लेफ्ट आर्म स्पिनर जिसमें आपने देखा होगा बहुत ही ऑफ क्लास बॉलिंग कर रहे इस टाइम लेफ्ट आर्म स्पिनर सो इंडियन पिच के लिए नासुम और मुस्तफिजुर रहमान कम बैक किया सो इनमें से कुछ प्लेयर बहुत ही ट्रेमेंडस इनके पास गुड साइड मिल गए जैसे बॉलिंग अब देखा जाए तो बांग्लादेश की बॉलिंग अटैक बहुत आउट क्लास है इस टाइम तस्कीन वेरी गुड बॉल मुस्तफिजुर रहमान हसन महमूद शरीफुल नासुम अहमद ये स्पिनर महदी मिराज महमूदुल्लाह एक्सपीरियंस प्लेयर महमूदुल्लाह भी आ सकते हैं तो इसमें बॉलिंग साइड देखा जाए तो इस टाइम बांग्लादेश टीम कोई हल्का नहीं ले सकता बांग्लादेश टीम के लिए साइड पर देखा जाए तो बॉलिंग साइड बहुत ही गुड कॉम्बिनेशन है अगर इसके आप देखेंगे तो बैटिंग साइड अगर ताओ इकबाल इफ बैक करते हैं और महमूदुल्लाह रियाद भी अगर बैक करते हैं अगर देखा जाए यहाँ पर आपको लिटन 10 थोड़ा ऑफ फॉर्म में है बट शांतो वेरी गुड फॉर्म है सो ओपनिंग बैटिंग से जो हम देख रहे हैं नंबर 6-7 बैट्समैन है ओडीआई के लिए और बांग्लादेश ओडीआई में बहुत ही अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता किस टाइम टीम कम बैक कर रहा है ये एक सरप्राइज टीम है जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे टीम कभी अंडरस्टिमेट कर रहे होते हैं बांग्लादेश को बट राइट नाउ नो वे बांग्लादेश टाइम इस वर्ल्ड कप में समथिंग विल डिफरेंट माय होप इज दैट बिकॉज इस कॉम्बिनेशन इज वेरी गुड राइट नाउ सीनियर प्लेयर कम बैक कर रहे हैं इंशाल्लाह और उम्मीद है शाकिब अल हसन के लीड से इस बार सेमी तक एक्सपेक्ट करता हूँ हमारी बांग्लादेश की टीम इंशाल्लाह सेमीफाइनल तक गोल्स इंशाल्लाह Inshallah, sir. Mr. Presley, where you see about what you see about Sri Lanka? Who will bring out from that last defeat and that pressure? Who will be the person who will bring back Australia, and who will be the underdog performer, which you think that will make a difference in the World Cup in a Sri Lankan team? I really need a one name. That's what I'm really looking for. Yeah, you can look out for Pathum Nissanka. Pathum Nissanka, very good player, and also he regular run getter for Sri Lanka. If he click, if the others can bat around him, and we can put up a good total. And as I told you previously, also Sri Lanka has a problem in consistency, and that is mainly in batting area. But bowling, we have been doing well, and even if you see in the Asia Cup, and Sri Lanka managed to get India out for 223 runs, right? So that is the lowest total that they posted in the Asia Cup, right? Having said that, this guy clicks, and definitely they will work around him. And also I have bit of faith on this guy, this new kid who has come to the party, Vela Lage. And you can see how he bowled and how he batted and how he managed the pressure. Playing in India means it's always about 80,000 packed crowd for any match, especially the World Cup.
and any ground you have that pressure, especially people play against India, it's going to be a war, right? True. People who can True, Mr. handle pressure, as Mr. Nair said, handle pressure well, and bring the team to the to what do you call the to a favorable position, and definitely they will have a chance to do well. So Sri Lanka, I'm actually putting these two players in front, Pathum Nisanka and Vela Lage. That's great. So By the way, where you see the gap in the fast bowling? Do you think that will be filled in this World Cup, or it will remain there? sorry, The spinners, I yes, didn't. you have the best spinners as a Sri Yeah, Lanka as a side, but you yeah. lack something in a fast bowling area. So what you Yeah, think? unfortunately, at the moment, quality fast bowlers are getting injured very often in Sri Lanka. That has been happening. Like if you see after Chaminda Vas got retired, Chaminda used to be a regular feature in Sri Lanka cricket. He used to play 11, 12 days at a stretch, and he won't get injured. But nowadays, fast bowlers are getting injured more. And this guy Chamikara has come back, and I'm sure that he will add a lot of value for pace department. But still, playing in India, it's mainly you need to concentrate on your quality spinners, right? If you have quality spinners, and if you can work around them, like fast bowlers comes and work around them. I'm not telling that they are not useful, but if the paces can work around the spinners, I'm sure that that scenario will be good. So Chamikara will be handy, and also Dasun Chanaka has to click, because as a Got your captain, point. if you would have seen, he entered the team as a all round, but if you see the last year or so, his performance as a batsman has gone down dramatically. So if he can chip in with the bat, his confidence level goes up, and his few overs in the middle of the match will be very useful for Sri Lanka's success. That's great. मिस्टर अब्दुल लतीफ़, व्हाट यू थिंक अबाउट अफगानिस्तान? आपके ख्याल से अफगानिस्तान का कौन सा खिलाड़ी ऐसा है जो एक डिफरेंस क्रिएट करेगा इस वर्ल्ड कप में और अफगानिस्तान की टीम को आगे लेके? अफगानिस्तान का तो अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड क्लास प्लेयर राशिद खान है, मुजीब है। राशिद खान तो सबको मालूम है, अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, और इसका बॉलिंग प्लेयर इंडिया पे बहुत मौसर होगा, इसलिए आईपीएल में बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया, और एशियन कंडीशन में बहुत अच्छा परफॉर्म है उसका। राशिद खान बहुत अच्छा है, मुजीब बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह हमारा बॉलर्स स्पिन डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, और एशिया में स्पिन डिपार्टमेंट का बहुत वैल्यू हो, और इंशाल्लाह अच्छा साबित हो जाएगा। तो अब्दुल लतीफ़ भाई, देखें, बेसिकली इस दफ़ा इस वर्ल्ड कप में दो चीज़ें यूनिक हैं। इंडिया का तो होम ग्राउंड इंडिया है ही, अफगानिस्तान का भी होम ग्राउंड इंडिया ही है। सो यू आर इस आल्सो तरह प्लेइंग इन योर होम ग्राउंड, तो आपको क्या लगता है उसका कोई एडवांटेज होगा अफगानिस्तान टीम को? एडवांटेज जरूर होगा, इसलिए अफगानिस्तान जो ज्यादा खेला है इंडिया में, ज्यादा सीरीज खेला है, दूसरे कंट्रीज के साथ सीरीज खेला है, और आईपीएल में अफगानिस्तान का तकरीबन 5-6 लड़का खेले गए, और इस एडवांटेज से हम फायदा लेंगे इंशाल्लाह, और अच्छा मैच खेलेगा हमारा प्लेयर्स। उसका इंडिया कंडीशन में बहुत अच्छा है। ग्रेट। लेकिन अब्दुल लतीफ़ भाई, जो हमारी एशियन टीम्स हैं वो दे आर गुड इन प्लेइंग स्पिन, और ये श्रीलंका और अफगानिस्तान दोनों का प्रॉब्लम ये है, यू हैव अ वेरी गुड स्पिन अटैक। तो आपको लगता है कि वो मौसर साबित होगा अगेंस्ट एशियन टीम्स, या फास्ट बॉलर्स की कमी महसूस होगी? फास्ट बॉलर का कमी था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी पूरा हो गया। नवीन उल हक जो तकरीबन 1 साल से अफगानिस्तान नहीं खेला था ओडीआई, अभी नवीन उल हक वापसी किया है, और इसके साथ साथ फजल हक फारूकी भी आपको देखा है, बहुत अच्छा है। और इंडिया में दोनों आईपीएल खेलेगा, दोनों का एडवांटेज इंडिया का होगा, और उसका पेस भी और इसका तजुर्बा वैरायटी बहुत ज्यादा है। इंशाल्लाह उससे वो कमी जो महसूस होगा वो अभी नहीं होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, नदीम भाई, जी आ जी जाते हैं पाकिस्तान की तरफ। जी क्या actually लगता है आपको? I will mention three things and I would like to explain them a little bit. Firstly, actually, the fearless cricket. Okay, so I will explain to it. Secondly, how well they will bowl with the new ball. Thirdly, the captaincy of Babar Azam.
So when I talk about the fearless cricket, actually mostly पाकिस्तान की ये जो टीम है ये इंडिया में नहीं खेले हैं ये लड़के. तो जैसे इंडिया में फुल पैक क्राउड होता है और फर्स्ट टाइम दे विल बी एक्सपीरियंसिंग दैट. So I think that will matter a lot. So if they play fearless cricket, they can really turn this around to their confidence. They will get a lot of courage out of this. So I will really like Pakistani players go and play their natural game instead of playing under pressure and then eventually giving up their wickets. Mostly that happens in when they do the batting. नदीम Secondly, भाई, जी सॉरी जी आपको काट रहा हूँ, एक क्विक क्वेश्चन है यहाँ पे कि जब ये कह जी. रहे हैं तो हमारी जो मेन प्लेयर्स हैं वो तो सारे इंजर हो गए हैं, तो उसके बाद आप नए लड़कों से उम्मीद रखते हैं कि वो इन वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स को कम्पीट कर भी सकेंगे, और अगर कर सकेंगे तो अंडरडॉग कौन होगा? देखें, ऐसा नहीं है कि मेन प्लेयर्स डेफिनेटली नसीम शाह और एहसान उल्ला they would have been the first choice in the bowling attack. Or लेकिन we can't do much when somebody gets unfit. So we should not forget what happened in 1992 World Cup when at that time the most destructive fast bowler Waqar Yunus got injured. But what happened? They took up taken up the responsibility. Mushtaq taken up the responsibility. और उन्होंने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके फिर उस अपनी गेम को पूरा उसको जस्टिफाई किया. तो मेरे ख्याल में यहाँ पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. और वसीम हसन, इसी तरह हारिस रऊफ, they also have the ability to pick up the wickets. We should not forget what Hassan Ali did in 2017 Champion Trophy. He was the best bowler in that Champion Trophy. मिडिल ओवर में आके 2-3 विकेट निकाल देना और फिर क्या होता है कि उससे बैटिंग के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ जाता है, स्ट्राइक रेट नीचे चला आता है. तो these guys have the ability और I don't think that will be a major issue. अगेन इंडियन जो कंडीशंस हैं विकेट्स की वो सेम पाकिस्तान के अंदर भी सेम कंडीशंस हैं. तो हाँ, अगर ये वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में होता, इंग्लैंड में होता, साउथ अफ्रीका में होता, then it would have been a big vouch and it would have been difficult to say anything. बट मेरे ख्याल में ये लड़के बेहतर करेंगे और बाबर की कैप्टनसी बहुत बड़ा रोल अदा करेगी. ही इज स्टिल ए न्यू कैप्टन, लेकिन one thing good with Babar is that he is a very cool character and he is a very nice human, and he always creates some kind of friendship atmosphere inside the dressing room, or that is very that is one of the strength that he has got. But on the other hand, जब अफरीदी नए बॉल के साथ विकेट नहीं ले पाएगा, जब ऊपर से विकेट नहीं मिलेंगी, तो हाउ ही विल यूटिलाइज हिज रिसोर्सेज, that will be a question mark. And again, this World Cup is a big opportunity. This will make the player legends, as we have seen in 92 World Cup. Sachin, Lara, Wasim Akram, they emerged as a legend. In 96 World Cup, there are a few other players got into the international role. In 99 World Cup, we have seen Ricky Ponting. तो हर वर्ल्ड कप कोई लेजेंड्स बनाता है. ये एक अपॉर्चुनिटी है. अगेन फियरलेस क्रिकेट और फिर उसके बाद नए बॉल को यूटिलाइज करना, एंड अगेन द कैप्टनसी फ्रॉम द कैप्टन विल प्ले अ मेजर रोल. That's great. Thank you very much, Nadeem bhai. Nadeem bhai. Coming back to Mr. K.R. Nayyar sahab. Sir, we have talked a lot about Asian cricket. Cricket is not limited to Asia. There is a world outside there. Where you see England and Australia in this World Cup? Yeah. When you Especially England, because they were the first team to introduce their team. They are very confident. और वैसे भी England has a lot of experience in conquering India and subcontinent. Yes. England players are now, earlier we used to say England cannot play in India. The conditions are terrible. The heat is this thing. Now, most of the England players play in the IPL and are very confident and adapted to. And for most of them, I doubt whether more than the county teams, it is the IPL teams are their home grounds. Because most of them are playing there. So they are all adapted. And look at the impact Ben Stokes and all have created. So England looks a very, very strong side. But understand, Australia is a team that can never be written off. They carry the experience of having won the World Cup repeatedly. And they can, and that too, they have adapted in many countries. Let us see, West Indies,
or let it be any subcon. That is what makes them a very strong side. So these are the out when you look at. But don't forget New Zealand. New Zealand has a side which is what do you call a all-round side. You know that if they click, they will go all the way up. So these are teams which we have to really look forward and because don't think that these are countries which come from not very hot conditions and they are all now adapted to the hot conditions and here like what I said like Nadeem said responsibility uh, to that each player if they play according to their responsibility taking up the responsibility of giving their best any team can be fearful because Australia be it England be it New Zealand be it they are very dangerous on their day. Sorry, question from Mr. Ashik. He's saying Australia is suffering in India at the moment with Indian B team. So, do you really think that Australia has any chance, and who will be their key player if they have a chance in World Cup? Australia, most of this time, I would say that David Warner and Steve Smith. They are two real fighters. They had a big setback after that incident, which put the brakes on their career. Otherwise, Steve Smith would have been one of the greatest of all time. He still is the greatest, but that flow would have continued. And now understand they are playing in India. That's a very good decision they took. They might lose to India because they are adapting, they are experimenting. But what happens during the World Cup will be totally different because they might give their best, and that is the challenge which all other teams will have to take up. That's great, Mr. Nayyar. Mr. Presley, what do you think about South Africa? They have just beaten England, and they have beaten them in a with very thick margins, you can say. Yeah, as Mr. Nair said, now just before the World Cup, and teams has been experimenting certain players, certain positions, composition of the team, and rhythm, and all this stuff, right? And we can't take those performances as like cemented or proven performances for the World Cup. World Cup is going to be a different monster, and like when anyone comes to World Cup and it's a glamour to play in the World Cup, they try to show their talent in a World Cup as individual and as teams, right? And most of the players are adapted to Indian conditions by playing in IPLs and all these matches in India because India is the hub of cricket in the world now. We have to accept it, right? So most of the That's true. players have that experience playing in India. So whatever happened just prior to the World Cup, we cannot take it as like okay, this team will do better. But gradually, there are teams changing their setting, changing their batting lineups, bowling lineups according to the Indian conditions, and it will be a different tournament altogether, right? And True, sir. every player will try to do their level best in the tournament. So you can't take South Africa's performance, but South Africa is a good team. Unfortunately, in every World Cup, they have been very unfortunate, very unfortunate. True. So hope this time they will do well and they will reach the finals. Why not? Inshallah. True. Thank you. Mr. Naeem, as though Mr. Nayyar has explained a little bit about New Zealand, can you go a little bit in depth on them? What you think about New Zealand chances to move towards the finals or at least being a semi-finalist for this World Cup? Yes, actually, in New Zealand, very, अगर देखा जाए the combination is obviously so strong team. मतलब मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस इंडियन
नईम साहब हम आपको लूज कर रहे हैं. I think we are facing some technical difficulties with Naeem. So let's move forward and pass this question to Nadeem. Nadeem, भाई कैसे हैं? जी जी भाई आपको जी क्या जी लगता है कि न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका, आई विल ऐड वन मोर कंट्री टू योर क्वेश्चन बिकॉज दैट वाज कमिंग टू यू. What you think about the chances about New Zealand and South Africa? See, we cannot write off all these teams. I mean, as Mr. Kiran has mentioned that most of the players of these teams have got very good experience in playing in India for playing for IPL. तो किसी को भी राइट ऑफ नहीं कर सकते. अगेन सबसे बड़ी जंग जो साउथ अफ्रीका खेलेगा, इट्स टू रिमूव देयर टैग ऑफ बीइंग अंडर चॉकर्स. तो वो उनको रिमूव करना है अपने ऊपर से. Talking about New Zealand, well, they are the gentle giant of the cricket. I mean, talking about their captain and all the team love to watch New Zealand whenever they play. They bring a lot of discipline into the game. They are very good fielders. और उनके पास 2 से 3 हमेशा इस तरह मैच विनर रहते हैं जो किसी भी गेम के पूरे रिफ्लेक्शन को चेंज कर सकते हैं. तो मेरे ख्याल में दे शुड परफॉर्म वेल. But again, I don't see both these teams getting into the semifinals. This is my opinion. But they can really write off any other team during the course of the tournament. That's great. अब्दुल लतीफ भाई, आपके ख्याल से एक टीम नीदरलैंड भी है जिसका कोई जिक्र ही नहीं कर रहा, कोई बात ही नहीं कर रहा, तो आपको लगता है कि वो कोई मैच जीत सकेगी या बस क्वालिफाई कर गई, इतना ही काफ़ी है उनके लिए? न्यूजीलैंड टीम अच्छा टीम है, वो भी अच्छा टीम है, सारा अच्छी टीम है. वर्ल्ड कप जो खेलेगा सारा वर्ल्ड क्लास टीम्स है. लेकिन हमारे ख्याल में इस वर्ल्ड कप एशिया कंडीशन में होगा. एशिया कंडीशन टीम जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा. इंडिया लाइक पाकिस्तान लाइक श्रीलंका. और अभी अगर देखा होगा ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जो पिछले सीरीज था बहुत अच्छा परफॉर्म साउथ अफ्रीका किया. ऐसे मालूम हो जाएगा जो साउथ अफ्रीका टीम भी कॉम्बिनेशन अच्छा है और वर्ल्ड कप में भी अच्छा परफॉर्म करेगा. और न्यूजीलैंड टीम भी अच्छा है लेकिन ये लास्ट मैच जो किया है इस इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया उसमें. Achha, thank you very much, Abdul Latif bhai. Mr. Persley, I know that you need to leave as well, so I'm going to ask you a very last question, then I will conclude with the rest of the gentlemen. Whom you think will win this World Cup? क्या आपको लगता है इंडिया ने एशिया, sorry, let me go back. India has been victorious for Asia. They won Asia. Will they win the World Cup? Or you think that some other team is going to win this World Cup? I know we all have some loyalties. We'll say our own country, Sri Lanka or Pakistan, I will say. But you can choose your country and one more team which you think is your favorite for winning this World Cup. By heart, it's Sri Lanka will win, right? Yeah. But in reality, if you see how the things are moving forward, and I have two teams in these conditions do well. That is India and Pakistan. So India, even though England, Australia, they are good teams, but considering the conditions, considering the support and the atmosphere, everything, actually I put my money for India and Pakistan. So these are top teams who can difference, right? And Okay. everybody probably looking forward to see India Pakistan final. That's true. That's correct. That's in the heart of many people in are thinking, subcontinent. yeah, India and Pakistan final. So I will put money for these two teams. Pakistan team also shaping up well, even though they missed out the finals in Asia Cup. But they have quality players, good quality players who can make a difference in these conditions. So let's And who will be the fourth wish for the team. semi-finalist? Sorry? Who will be the fourth semi-finalist for you? Semi-finalists probably India, Pakistan, and Australia and England. These are the 4 teams who can reach semi-finals. That's great, Mr. Presley. Mr. Abdul Latif भाई, हस्ती गुल आबिद भाई कह रहे हैं कि उनको नजर आ रहा है कि फाइनल जो है ना, Hopefully, sorry to disturb you. Hopefully, I can leave now. Yeah, Mr. Presley, you can. Assignment
at Sure, it. sure. And It was really wish you honor to guys have all you. the best. And once again, thank you very much for inviting me. Hope to see you Thank all you, Mr. soon. Chaplain. Thank Thank you very you. much, sir. Thank you for coming. Thank you for being part Thank of you. us. Thank you. And hopefully we'll see you in 1st, 2nd, and 3rd December in Sharjah International Cricket Stadium in SuperFix Table Tournament as well. Yeah, please. Yes. Sure. Thank you. Let me Thank you, know. Master. Thank you very Thank you. much. Thank Okay. you much. Right. Thank you, Master. Bye. अब्दुल लतीफ़ भाई, हस्ती गुल आबिद साहब जो एक्स नेशनल प्लेयर हैं अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के, उनका ये कहना है कि जो फाइनल है वो इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान वो देख रहे हैं। आपको क्या लगता है? इंडिया इंग्लैंड? हम तो पहला कोशिश करेगा इंशाल्लाह अफगानिस्तान और इंडिया करेगा। तो हस्ती का बात जो है हमारे ख्याल में इंग्लैंड नहीं आएगा, इंडिया और साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया आएगा हमारे ख्याल में। लेकिन हम चाहिए अफगानिस्तान आएगा 4 मैचेस सेमीफाइनल में। इसलिए हमारा टीम जो एक दफा क्लिक हो जाएगा फिर सारा टीम को टफ मैच देगा इंशाल्लाह, टफ टाइम देगा सारा टीम को इंशाल्लाह। अब्दुल लतीफ़ भाई, थैंक यू वेरी मच। नदीम भाई, आप कौन सी 4 टीमें सेमीफाइनल में देख रहे हैं और किस टीम का फाइनल होता देख रहे हैं और फाइनल जीतता किसको देख रहे हैं? आपने पाकिस्तान, मुझे पता है बोलना है, पाकिस्तान के साथ आपने मुझे एक और टीम भी बतानी है जो आप फाइनल जीतती देख रहे हैं। नहीं, मैं 3 मुल्कों के नाम पहले तो बोलूंगा कि पाकिस्तान। Now, on a serious note, actually, when talking about the semi, first of all, I really hope and I think that Asian teams are going to do well. Afghanistan have got the best spinners of the world. Sri Lanka can surprise the world, and India, we all know that the way they have played Asia and Asia Cup, they are a tremendous team. And don't forget Bangladesh. Bangladesh has a habit of kicking some of the favorite team out of the World Cup. नईम भाई knows that very well. और लेकिन अगर आप मैं इसको शॉर्टर करूं तो सेमीफाइनल के अंदर again as per the teams on the paper and the way they have performed in the past 1 year, England, Pakistan, India and Australia, they can be the semi-finalist. और अगर आप उसको और नैरो डाउन करें, मेरे ख्याल में पाकिस्तान and India should be in the final. And if you are saying that who will win, well, I consider India has got more chances, but my heart goes for Pakistan. That's great. Mr. Naeem, what you think? Bangladesh will make 2 semis? I think we all hope and we are pray as well. At the same time, who will be your favorite 4 semi-finalists? Who you think will play final? What are the 2 teams you think will be the winners? Yes, actually, obviously, first of all, तो अपनी कंट्री को जैसे कहते हैं ना विश होता है सेमीफाइनल खेलना, so my wish is that सेमीफाइनल खेल सकते हैं। बांग्लादेश को कैपेबिलिटी है एज पर एशियन कंडीशन पिच जो वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है। और टॉप ऑफ द लिस्ट पे ऑब्वियसली है सर नैयर सर सामने बैठे हैं, बस बहुत एक्सपर्ट है, उनको पता है पूरे वर्ल्ड में ही सबको पता है इंडिया टीम इज टॉप। एक 10 ओडीआई की इसमें है, प्लस इसमें अगर देखें मतलब एज पर परफॉर्मेंस और एशियन उनके होम ग्राउंड सेकंड उनके पास जो न्यू टैलेंट आया सो ट्रेमेंडस और अपने होम ग्राउंड पे ये बहुत ही सरप्राइज क्रिकेट खेलेंगे। शुभमन गिल ऑब्वियसली इज अ वेरी गुड बैट्समैन और साथ साथ रोहित की जो कैप्टनसी है और विराट कोहली, मतलब एवरीबॉडी मतलब इसमें आप 8 नंबर तक बैटिंग देखें तो टॉप में इंडिया आ रहा है। सेकंड जैसे नदीम भाई ने बोला पाकिस्तान, तो ऑब्वियसली सेकंड टीम मैं तो कंसीडर करूंगा। सेमीफाइनल के बाद भी फाइनल तक भी ऑब्वियसली जो है पाकिस्तान जाएंगे, बट एज पर मेरी अपना एक्सपीरियंस ओपिनियन, जैसे मैं पाकिस्तान बांग्लादेश में खेलते हैं, पाकिस्तान में मैंने क्रिकेट खेला है डोमेस्टिक काफी। सो ये एशियन जो क्रिकेट ग्राउंड है इसमें अफगानिस्तान भी सरप्राइज कर सकता है। अफगानिस्तान के एक इश्यूज है बैटिंग कंसिस्टेंसी हमारे बांग्लादेश की तरह, बट बॉलर अगर देखा जाए स्पिनर पूरा वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो इन एशियन पेस में सबसे ज्यादा सरप्राइज हो सकता है अफगानिस्तान की स्पिन डिपार्टमेंट। हाँ, पेसर अगर देखा जाए तो थोड़ा सा कम है, और पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा कहते हैं ना डेंजरस पेसर जो बोला जाता है तो पाकिस्तान में। सो इंग्लिश पे बेसिकली मैं इस वर्ल्ड कप में इंडिया में मुझे इन पिचों में इनके जो बैटिंग आउटस्टैंडिंग है उनके पास नो डाउट सारे टीमों की अगर देखा जाए तो इंग्लैंड पे आप देखें, ऑस्ट्रेलिया, ये न्यूजीलैंड, ये टीमें बैटिंग में बहुत स्ट्रांग है, बट कुछ चीजें स्लोअर गेम मिक्सअप
इन विकेट पे जो है ना जो इंडिया में स्पेशली बांग्लादेश में और पाकिस्तान में ये थोड़ा सा ट्रिकी विकेट होता है, थोड़ा सा बाउंस होते हैं, कभी कभी डाउन होते हैं। तो इन इन पिचों में जो है ना बैट्समैन को इनको इतना आदत से नहीं है, नमी होते हैं, गीला होगा अभी शायद नैयर सर होंगे पता होगा अभी सीजन जो आ रहा है अभी इसमें काफी बॉल कभी इशू हो सकता है, मतलब ग्राउंड थोड़ी सी ना गीली गीली टाइप होते हैं और इंग्लिश वो लोग फास्टर क्रिकेट बहुत ज्यादा लाइक करते हैं। और आपने देखा होगा आईपीएल इज डिफरेंट क्रिकेट है, उसमें पिचेस डिफरेंट है और वो टाइम ऐसे टाइम में टूर्नामेंट होते हैं उसमें बिल्कुल ही बैटिंग फेवर की तरफ जाता है। बट इस पर वर्ल्ड कप मेरी अपना ओपिनियन एशियन टीम सबसे बेहतरीन परफॉर्म करेगा और जिसमें से चार टीमें सेमीफाइनल हो सकते हैं, जिसमें मैं एक तो ऑस्ट्रेलिया की जगह इंग्लैंड पे लूंगा और पाकिस्तान इंडिया ऑब्वियसली होप जो है बांग्लादेश के भी सेमीफाइनल तक सोच रहे हैं। बट ओडीआई में अगर मैं शॉर्टली फिनिश करने जा रहा हूँ, ओडीआई में बांग्लादेश को थोड़ा सा एक्सपेक्ट करना कहते हैं ना वो अनएक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस बार ओडीआई में जिस तरह से टीम मैंने कॉम्बिनेशन देख रहा हूँ माशाल्लाह से बांग्लादेश टीम बहुत अच्छी कर रहा है और इन पिचों में यूज टू है स्पिनर। ये बांग्लादेश टीम 300 इजी चेस कर लेते हैं इस टाइम, यंग जनरेशन जो लड़के आए बहुत अच्छे है, स्पिन डिपार्टमेंट बहुत ही अच्छा है इस टाइम और 3 पेसर ताशकीन, मुस्तफिजुर रहमान और हसन महमूद एक शरीफ, ये जो है ना ट्रिकी चेंजेस बॉलर है और ये मुस्तफिज तो आपको बताए बहुत ही आउट क्लास इंडिया पिचों में यूज टू है ये। सो बैट्समैन भी आप देखा तो बांग्लादेश में वेरी गुड कॉम्बिनेशन। मैं ये नहीं कर सकता बांग्लादेश में सेमी तक नहीं खेलेंगे, इंशाल्लाह होपफुली खेल सकते हैं, बट इज कैपेबल है, डिपेंड पर एवरी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी खेलेंगे और ऑब्वियसली इन पिचों में यूज टू है। मेरी अपना ओपिनियन है, मतलब ये जो इंडियन पाकिस्तान एशियन क्रिकेट जो पीसेस है इसमें ये एशियन टीम परफॉर्म अच्छे करेंगे इस वर्ल्ड कप में, मेरी अपनी ये ओपिनियन है। बाकी टॉप 4 में अगर देखा तो इंग्लैंड 4 टीम, अब मैं अपनी टीम को शामिल करके इंडिया पाकिस्तान और इंग्लैंड और जो है बांग्लादेश, ये 4 टीम सेमी तक मैं अपनी सोच रहा हूँ, बाकी गॉड ब्लेस लेट्स सी हो सकते हैं ऑब्वियसली टॉप टीम है जो है ऑस्ट्रेलिया भी आ सकता है, बट फाइनल एट द एंड इंडिया पाकिस्तान माय ओपिनियन। जैब भाई आपको आपकी बात काट रहा हूँ, मैं एक चीज मेंशन करना चाहता हूँ कि अब्दुल लतीफ साहब यहाँ पे मौजूद हैं और हस्ती गुल आबद भाई, he is ex Afghanistan international player. He was trying to join us, but due to internet connection, he could not join. मैं ये कहूंगा क्योंकि मैं केपीके से हूँ पाकिस्तान में, तो जिस तरह का टैलेंट अफगानिस्तान के जो क्रिकेटर्स का ऊपर इमर्ज हो रहा है, I just want to mention that they have got tremendous ability. They just need one good batsman like Babar Azam, Kohli, or maybe somebody closer to them. They can rock the world. और क्योंकि मैं केपीके से हूँ और बहुत सारे अफगानिस्तान के लोग वहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं, अमेजिंग टैलेंट। Thank you very much, Nadeem bhai. Very good add-on. Nayyar bhai, coming back to you. Nayyar bhai, where you see Pakistan team in this World Cup? Do you know one thing about Pakistan cricket? Everyone sees me as an Indian, but I am one who has reported the maximum number of Pakistan matches because most of the matches were held in Dubai. UAE, in Dubai, UAE, Sharjah, Abu Dhabi, and almost all the matches I have been covering. So many, I followed Pakistan team a lot. So I know Pakistan team's biggest advantage is that if they are united, no team can touch them. It depends on their will. A strong leader who can bring the best out of the players because the players are very good. But the point is that the players should play for the team and accept the captain. Why did Imran Khan win the World Cup? At that time, Imran Khan had the command and ensured that he gets the best out of the players. And everyone was united and they gave their best. So if Pakistan team, all the players give their best to the captain, follow the captain, play united. You ask any team, a united Pakistan team is the most dangerous team in the world. So that is a point where
I would put Pakistan's chances. Then, Sir, yeah, tell me. please, no, continue, sir. Please continue. Yeah. What I like about what you may ask why you wonder, I would like an India Pakistan match in the final. An India Pakistan final is very good for cricket. Why is it good for cricket? T20 format would not have been the most popular format but for India Pakistan final in the first edition and India going on to win, and then the history changes. India was not interested in T20 cricket. So that changed the world of cricket, the approach of cricket. Same thing can happen in this. 50 over now needs a push because now, yeah, all shorter formats are creating a big impact. It is at the time that an India Pakistan final should be held, and if that happens, it is good for world cricket. Thank you very much, Mr. Nayyar. You're coming with 40 years of experience in cricket, which is like more than my age, more than the age of many people. You are the most expert person in our panel. So, what you think, based on the current performances of the teams and the team selection? I know that you have a very critical eye on each and every player and the teams. Who will be the four semi-finalists, and who will be the semi-finalist, and who will be the winner? Without what your heart says that it should be India, Pakistan, it should be India something, but based on the stats, what you feel that where this World Cup is going? Let me ask you, everyone ask me, can you predict a winner? No. If we can predict a winner, then that tournament is useless. True. Because a tournament to be very good, it should be an unpredictable tournament. Nobody should get up and say, this team will win. That should not be, because Okay. the team that plays best should win. That is my I will say the best answer ever I got. That's the result of the 40 years of experience, Mr. Nayyar. Because that is what you Yeah. what do you want your team to win or my team to win? But I want, as a cricket writer, especially based outside India, and having reported all the Asia, especially all the Asian teams, I want a team that plays best to win a tournament. That's Because great, Mr. Nayyar. if that is so, that is cricket. What are you watching? Yes, everyone will sit and watch and tell, I want my team to win. But if it is poor cricket, who wants to see such a cricket? Nobody wants. So I would never ever predict. Why I don't predict a winner is because it is easy to predict a winner. India is playing in India, India can win. Last 3 World Cups, the host nation has won. So host nation can win. But if host nation, what is written should be unwritten. What will happen should not happen. That is cricket. Cricket is unpredictable game. And that unpredictability is the one that should go on. So for me, I will tell my heart, I want India, Pakistan, Australia, England in the semi-final, because looking at the form, they can reach the semi-final. But do you know that I like New Zealand? For me, New Zealand, when I saw that New Zealand lose in the last World Cup, and that too on boundaries and other things. So my heart was with New Zealand. So why not New Zealand? So that is what, let it be in India, and Indian supporters will want India to win. But nothing like a unpredictable and a team which has been battling, knocking, and New Zealand win the World Cup. It's brilliant. So that is what makes cricket going. That is what you will want cricket to be excellent and to be watched. That is what I expect. That's great. Thank you very much, sir. It was one of the amazing answers, sir. A quick question, one more quick question. Hanis Gulbaz, he's an Afghanistan player. The question is that, do you think he can be next Rohit for Afghanistan? It came from Mr. Abrar Wali, who put in the comments. Yeah. See, Rohit Sharma carries
and tremendous experience behind him. Look at the kind of centuries that he hit, centuries after centuries after. But let me tell you about Gurbaz. He has the strokes. He has the ability to demolish any attack. And that too, you should appreciate a cricketer coming from Afghanistan, and that too in difficult circumstances, come and challenge the best of bowlers. And that is a delight. That is cricket. So you cannot, it is not right to compare Rohit with let us compare the talent, the circumstances from which, and if Gurbaz does like Rohit, then it's hats off. He should be hailed as a great player, but he has the potential. Great, sir. I will come back to you. अब्दुल लतीफ भाई, आपका गुरबाज के बारे में क्या ख्याल है? आप उनका फ्यूचर क्या देखते हैं? मुझे जहाँ तक पता है आप उनके रिश्तेदार भी हैं शायद। गुरबज को आपको भी मालूम है, गुरबज जो एक दफा क्लिक हो जाएगा और 30 प्लस स्कोर करेगा और पक्का 100 करेगा इंशाल्लाह, और उसका स्कोर टीम के लिए बहुत अच्छा आएगा। इसलिए वो जो स्कोर करेगा अच्छा स्ट्राइक रेट पे करेगा और उसका स्ट्राइक रेट 100 प्लस होगा। तो उस ओपनर जो स्ट्राइक रेट 100 प्लस होगा वो टीम के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो जाएगा। और इससे तो फिर नेक्स्ट प्लेयर जाएगा उसका हौसला भी बढ़ जाएगा और वो टीम के लिए बहुत अच्छा साबित हो जाएगा। और गुरबाज एक ऐसा प्लेयर है वो जो एक दफा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता स्कोर करेगा और एक दफा जो 30 प्लस 30 प्लस स्कोर करेगा तो वो बहुत सारा मैच जो खेला है 30 प्लस से बाद उसका सेंचुरी ज्यादा है, तकरीबन 22-23 मैचेस में उसका 500 से, ये बहुत अच्छा है और उसका इंशाल्लाह इंडिया कंडीशन में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा और उसका बेस्ट प्लेयर होगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। सो नदीम, आपको क्या लगता है ये वर्ल्ड कप हम बहुत ज़्यादा एशिया कर रहे हैं, आपको एशिया से बाहर जाता वर्ल्ड कप नज़र आ रहा है कि नहीं नज़र आ रहा? टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट थिंक सो। मुझे एशिया से बाहर जाता हुआ नहीं नजर आ रहा है क्योंकि नॉट टेकिंग एनी क्रेडिट अवे फ्रॉम इंग्लैंड, जैसे उन्होंने एक ट्रेंड सेट किया है कि दे स्कोर इवन 5 per over in the test matches. They have got some of the best players of the world, but still again conditions are very important. So Indian conditions where the reversing might also come into play in the last few overs, और फिर earlier on ball swing होगा और spinners will play an important role. Not necessary that they will get a huge turn, but again there is a different technique to play the spin. And again जो हमारी Asian countries हैं, they have got tremendous experience. So I think that England, Australia, South Africa, New Zealand, they will really have a tough time. We should not forget as also like a few other teams like Netherlands and all, but again, I would prefer one of the Asian team wins, and I think that one of the Asian team might win in the World Cup. Naeem bhai, same question goes to you. Then I will go towards the very last question towards Mr. Nayyar, and we'll close the show. So, Naeem bhai, आपको क्या लगता है? This World Cup will stay in Asia or will it go to the West or Africa? No, actually, again, I'm saying because of condition, जैसे नदीम भाई ने कहा, I believe that for actually condition pitches, Asian pitches जो है used to Asian player or advantage obviously Indian cricket team right now very stronger. So जैसे नैयर सर ने कहा, obviously एक टीम जेल जो अगर पूरी वर्ल्ड में देखा जाए तो एशियन टीम के अंदर एक इंडियन टीम के अंदर एक जेल है, मतलब वो उनके एक्सपीरियंस के साथ साथ यंगस्टर भी एक टीममेट की तरह विन की तरह परफॉर्म इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल लेके खेलते हैं। तो इस पे काफ़ी चीज़ें मैटर करती है क्योंकि एशियन क्रिकेट जो पाकिस्तान में देखा जाए तो आपने देखा वो नए साल का वहाँ पर कॉम्बिनेशन बहुत आउट क्लास है। हाँ, बहुत आउट क्लास है। बैट्समैन देखा जाए तो पाकिस्तान में भी नो डाउट जो अभी करंट है ये भी यंगस्टर बहुत आउट क्लास है, बट
जेल नहीं है टीम के साथ, कप्तान के साथ नहीं है। बट एशियन टीम मैं ज्यादा इसलिए कंसिडर कर रहा हूँ, एट द एंड बाबर कम बैक करेगा तो पाकिस्तान डेफिनेटली बड़ी खतरनाक एक टीम बन सकते हैं, क्योंकि अब बड़े क्रिकेट में जो पिछले कुछ टूर्नामेंट में देख रहा हूँ, जैसे वर्ल्ड कप हो गया, एशिया कप पे भी आप देखें बाबर क्लिक नहीं कर रहा। बेसिकली एज ए बीइंग अ कैप्टन उनको क्लिक करना चाहिए, जैसे रोहित शर्मा इज ए कभी भी किसी को भी डैमेज करते हैं, आते ही अटैक करते हैं और कॉन्फिडेंस लेवल से खेल रहे होते हैं। सो एशियन इन टीमों को इस कंडीशन में मैं ज्यादा एक्सपेक्ट करता हूँ। एट द एंड अगर देखा जाए, नो डाउट न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, दैट ग्राउंड पे उनकी एक अलग ही क्लाइमेट है। यहाँ पर एटमॉस्फेयर, वेदर भी डिफरेंट है, थोड़ी सी मतलब काफी इन चीजों डिपेंड कर रहा है पिच के ऊपर और कंडीशन और वेदर के ऊपर। तो मैं Got your आई point. बिलीव दैट या Okay. So, Naeem bhai, if you want to give any ending remark, then I will go to Mr. Nayyar, and then me and Nadeem will close the show. So, एक्चुअली just one. रिमार्क्स सर, नैयर सर ने बोला एक्चुअली क्रिकेट पे डेफिनेटली एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता, हो सकते एशियन से भी जा सकते बाहर। बट एट द एंड टीम जो है, जो मुझे ऐसा लगता है प्रेडिक्ट तो नहीं दे सकता, बट पाकिस्तान, इंडिया, ये दो टीम मेरे ख्याल में अच्छे क्रिकेट नजर आएगा, स्पेशली इंडिया जो होम ग्राउंड है, और उनकी कॉम्बिनेशन भी वेरी ट्रेमेंडस। सो उस पे Got नो your डाउट टॉप पे मैं इंडिया को ही रखूंगा, कि उनकी एज पर Got you. परफॉर्मेंस, एज पर कॉम्बिनेशन। Got your point. थैंक यू। Mr. Nayyar, coming back to you, a lot of people are talking a lot about role of spin and fast bowling in this World Cup. Do you think Role it's of? role of spin and fast bowling in this World Cup? Spinner, yeah. Yeah, a lot of people think the spinners will make a huge impact. Though my view is a bit different. I feel that all the Asian teams know how to play spin as well, Yeah. so it might impact against the outside Asian teams like European teams and African teams and Australian teams, but it might not impact against the Asian teams. So, how you feel that difference between spin and fast will make an impact in this World Cup, and then what you want to give as your conclusion or concluding statement, then we can close the show accordingly, sir. Yeah, Nabil, as you said in your question itself, all are good players of spin. So, what will make or create an impact That's among the question to spinners? you. Yeah, Yeah. that is the question we will have to answer. So, Yeah. I will tell you. Let us talk about Rashid Khan. Yeah. Why is he? Why all Asian players are afraid of him? You know that is what I said, that a quality spinner, it doesn't mean the conditions and other things. A quality spinner is a dangerous spinner. So it doesn't mean that he cannot run through. You see what happened in case of Kuldeep Yadav. Sri Lankans don't know to play spin. They are good players of spin, but he ran through because the tricks in his armor. So what happens is, whether the conditions are good, whether everything is good, the spinners with the kind of techniques they have, the skills they produce in these matches, the stock deliveries, the surprise deliveries, all these things play a very good role. Yes, now you say England and other nations do not know to spin. They play spin very well, because they are not practicing most of the time in England. They are most of the time playing in Asian countries, so they know what is the kind, how it is the approach they have to follow when playing spinners. And let us take even Pakistan spinners are very good. You know, they are all guided by legendary spinners, and they are being brought into the scene. They know what makes how to adapt to the conditions and take wickets. So if you tell me spinners will create an impact, I will tell spinners who have the skills to actually trap batsmen, who have the experience to actually mesmerize the batsmen. They will create an impact, because mind you, Bangladesh have it, Pakistan has got it, Sri Lanka has got it, and even India, as you know, they have the best spinners too.
So every spinner, every team has got spinners, but who will stand out? Who will stand out is the bowlers who will who have come, who will be coming with lot of the tricky deliveries, and that will create an impact. Yeah, great. That's great. So, Mr. Nayyar, you want to conclude the whole discussion with any one liner or any statement from your side? One liner, if you tell me, I would tell you. As I don't know how much everyone will agree. Please enjoy the cricket than support your own team and run away from the TV. You should, Right. if any opposition, even if any team is which you don't like is doing well, please watch the quality of cricket, the beauty of cricket. And I Yeah. have one advice for youngsters: please do not watch cricket based on your country. Watch cricket based on the technique, the skills they are displaying. The World Cup is for you to learn, and so please enjoy your cricket. And then I would be very happy. It doesn't matter who takes the World Cup, whether it takes the World Cup out of India or remain in India. But if the World Cup gives the best of cricket, enjoy the cricket and be happy. Very well said, Mr. Nayyar. Just to tell everyone, as we are witnessing a Cricket World Cup next month, but in the first 3 days of December, first, second, third of December, which is a national day of UAE as well, SuperFix Sports is bringing on a table cricket tournament. It's like an international tournament. Definitely, it is not supported by ICC or an official tournament, but it's one of its kind or unique kind of a tournament which happens in Sharjah International Cricket Stadium, one of the very historic stadium for the cricket lovers, especially for the Pakistanis who have won this the last ball sixer, the famous one. So at that very stadium, the table starts from India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Oman, Saudi Arabia, UAE. Around 8 countries will gather there and play table cricket, which is very close to subcontinent. Uh, we all grow up playing table cricket, especially in the streets. I still remember that when ball used to go into, we call it in Urdu, a nali, which is like a gutter on the side. We used to bring that ball out, throw it on a wall 3 or 4 times, think that is clean, and just start playing again. So that kind of cricket is now at an international level at Superfix. Sports is bringing it to Sharjah International Cricket Stadium. Nadeem is also an operations director for Superfix. He's playing a dual role here. So he was representing Pakistan till now. Now he's representing Superfix. Nadeem, do you want to tell anything about this particular tournament to our audience before we sign off or we close the show? See, I just want to tell the audience that one question actually just now it was posted, I think, by Abrar Wali that why Pakistan produces such a quality fast bowlers. One reason, Pakistani people they play with the tap ball, and the tap ball is very light, and you have to put a lot of force to throw the ball fast as possible because in tap ball cricket the batters will have no mercy. They can hit you five and even up to six sixes in an over. So you have to bowl fast as possible. सो टैप बॉल क्रिकेट ने पाकिस्तान को बहुत अच्छा टैलेंट दिया. हारिस रऊफ को हम देखते हैं, ही इज द फास्टेस्ट बॉलर इन दिस करंट पाकिस्तान क्रिकेट टीम. ही केम फ्रॉम द टैप बॉल. इसी तरह नसीम शाह को हम लोग देखते हैं, उससे पहले मोहम्मद जायद एक फास्ट बॉलर गुजरा है. क्या नायर साहब नोज हिम वेरी वेल. तो इवन शोएब अख्तर हैज प्लेड क्वाइट अ बिट टैप बॉल क्रिकेट. आसिफ अली हैज प्लेड टैप बॉल क्रिकेट. और ये बहुत सारे लोग जो है वो टैप बॉल क्रिकेट खेल के ऊपर आए हैं. तो टैप बॉल क्रिकेट क्या है कि हम देखते हैं बेसिकली मोस्ट ऑफ अस वी आर बेस्ट इन यूएई. यहाँ पे पार्किंग लॉट्स के ऊपर मुख्तलिफ जगहों पे टैप बॉल क्रिकेट खेली जाती है. तो सुपरफिक्स स्पोर्ट्स जो विजन था हमारे चेयरमैन साहब नवीद साहब और वाइस चेयरमैन और पूरी मैनेजमेंट टीम का कि इन लड़कों को चांस दिया जाए एक इंटरनेशनल स्टेडियम में, और वो भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर शारजा स्टेडियम में. और 6 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया हमारे सीजन 1 में, और वी हैव गॉट ओवर 23 मिलियन व्यूवरशिप. एंड गेस व्हाट, in that tournament team played from Saudi, from Oman, from Pakistan, from Sri Lanka, and from India as well, apart from UAE. So India's special team I care Nair Sahab, and they have played in our tournament, and that particular match was being watched by over I think 13 million viewers at that point of time.
So that was amazing. Or Sharjah Cricket Stadium, it was almost full when that match was getting played. इस मरतबा हमारी कोशिश ये है, अब्दुल लतीफ साहब हमारे पास मौजूद हैं, मैंने बड़ी तारीफ की कि बहुत ही यंग अफगान टैलेंट जो है वो लाइंड अप है एंड अफगान कैन सरप्राइज द वर्ल्ड इन द फ्यूचर. और टैप बॉल से बहुत ही बढ़िया क्रिकेट खेलते हैं अफगानिस्तान के बच्चे, स्पेशली आई एम फ्रॉम केपीके एंड ओवर देयर. आई एम रियली होपिंग दैट वी विल हैव अ टीम फ्रॉम अफगानिस्तान एज वेल. He is representing Kabul Zulmi, and I really be hoping that this young talent also come and play in this tap ball. It is kind of World Cup of tap ball cricket tournament. और अफगानिस्तान के अगर बच्चे आके खेलेंगे तो वहां पे इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत सारे लोग आते हैं, मैचेस खेलते हैं, and we will have a lot of fun. Similarly, Naeem bhai is here. We are also having one team from Bangladesh lined up for this tournament. And Naeem being the operation manager of Bangla Tigers, let me tell you that some of the international players like Iftikhar, Muhammad Amir, Shakib Al Hassan, Imran Farhat and all, they have played in Bangla Tigers. Okay, so they also organize a very good leather ball tournament. Now we are giving chance to all these people to come and play in the SuperFix Sports. And tournament is also happening on 1st, 2nd and 3rd December, which is also a नेशनल डे फॉर यूई. तो उसको नेशनल डे का भी टच दिया जाएगा, पेट्रियोटिज्म, और उसके साथ साथ क्रिकेट भी होगी. और बहुत सारी एक्साइटमेंट है. वी हैव गॉट सम ऑफ द लेजेंड ऑफ द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट लाइंड अप टू बी आवर ब्रांड एम्बेसडर. हमारे जो सीजन 1 था उसकी ओपनिंग सेरेमनी में क्रिस गेल ने उसको चार्म अप किया था. और इस मरतबा एक और बहुत ही जबरदस्त शहजादा, हम सब का प्यारा, हम सब का दुलारा लाइंड अप है. उम्मीद है हम उसको देखेंगे स्टेडियम के अंदर स्पेक्टेटर्स के साथ सेल्फीज बनाते हुए, वीडियोस बनाते हुए, म्यूजिक शोज होंगे और लाइव गेम्स खेली जाएंगी. It will really be an honor if all my panelists will be there in the ground on 1st, 2nd and 3rd December, and also they are backing up their teams to come and play in this tournament. Okay, thank you much नदीम. अब्दुल लतीफ भाई, आप एंड में कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि आप ड्रॉप हो गए थे तो आप कुछ बोल नहीं सके. आप कोई वर्ल्ड कप पे आखिरी मैसेज देना चाहेंगे एक दो लाइनों में? अगर वो दे दें तो हम प्रोग्राम को कंक्लूड करके बंद करते हैं प्लीज. हमारा तो नजर सारा इंशाल्लाह बात मेंबर्स बात किए है. और हमारा नजर से जो वर्ल्ड कप है, इस वर्ल्ड कप में फेवरेट टीम जो है हमारा नजर से इंडिया है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है और पाकिस्तान है. इसमें 4 टीम सेमीफाइनल तक जाएगा. और हमारे ख्याल में वर्ल्ड कप फाइनल जो है, फाइनल तक इंडिया और साउथ अफ्रीका जाएगा हमारे नजर से. इसलिए साउथ अफ्रीका अभी जो मैचेस खेला बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, उसमें बहुत अच्छा बैटर्स है और अच्छा बॉलर्स है और इसके साथ बहुत अच्छा हिटर्स है जो तकरीबन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 400 प्लस स्कोर किया. इससे मालूम हो जाएगा वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना है. लेकिन फिर भी एडवांटेज ज्यादा एशिया कंडीशन का, एशिया टीम्स के. हमारा ख्वाहिश है जो वर्ल्ड कप एशिया में रहेगा और एशिया टीम्स जीतेगा, ये हमारा ख्वाहिश है. इंशाल्लाह. थैंक यू वेरी मच आप सबका कि आपने हमें ज्वाइन किया. नैयर साहब, इट वाज रियल ऑनर. मतलब आप जैसे तजर्बाकार बंदा आज हमारे साथ बैठा था. अब्दुल लतीफ साहब आपका बहुत शुक्रिया. नईम भाई आपका बहुत शुक्रिया. नदीम भाई आपका बहुत शुक्रिया. तमाम सुपरफिक्स के व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस. इट वाज अ ग्रेट शो, वन ऑफ द हैवीएस्ट पैनल वी एवर हैड. और एज नैयर भाई हैज सेड के don't support your team, support the cricket, and we wish that we will see the best cricket in this World Cup and we'll witness the best team to win irrespective of their nation race. Inshallah the cricket will win. Thank you very much. बहुत जल्द दोबारा हाजिर होऊंगा एक नया शो लेके. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.